Hello everybody, Namaste. I am Anurag Kushwaha, intern NII Jaipur, Rajasthan. Today in this video, I will share the information about AIA PGET exam in detail. I will tell in this video about introduction of exam and AIA PGET 2025 important dates, fee for every category, as well as how to fill the examination form so that you avoid any kind of mistake while you are filling the form. Then I also discuss about the eligibility criteria, and then I share very important points everyone should follow and keep in your mind while you are filling the form. So one by one I will share everything in this video. Okay, first of all I am giving introduction of exam. AIA PGET exam यानी ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. This exam is organized by or conducted by the NTA, and this exam is organized for post graduation admission in Ayush courses to do the MD or MS. Like अगर आप आयुर्वेद से हैं या होम्योपैथ से हैं, यूनानी से हैं या सिद्ध से हैं, for every Ayush course this exam is common for all courses. If you want to take the admission in any college, either private or government, for post graduation you have to give this exam. Okay, next, now I am going to share about the eligibility criteria for the AIA PGET exam 2025, and NTA has published a clear notification about the eligibility criteria for this exam is those doctors and those candidates will complete their internship duty or internship on or before the 30 June. They are eligible for this exam, means they can apply the application form and they also give exam. Okay, but those candidates who are unable to complete their internship before the 30 June, then they are ineligible for this exam. Okay, and but I am telling you, अभी भी कुछ लोग हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30 जून से एक्सटेंड हो जाए. लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, किसी के कितना भी जोर लगा लो, ये एग्ज़ाम जो एलिजिबिलिटी का जो फिक्स कर दिया गया है ना, वो अब बढ़ने वाली नहीं है. सो जिनको तैयारी करना है वो तैयारी करें, जिनको कोई और काम करना है वो और काम करें. इस साल के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं. जिनका 30 जून तक इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. देन अब मैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ. देखो, ये कंप्यूटर बेस्ड है यानी CBT बेस्ड है, ये पेन पेपर पे नहीं होता है. दूसरा, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स का होता है यानी 2 आवर्स का होता है. अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करते हैं तो -1 मिलेगा, जैसे नीट्स का था, नीट एग्ज़ाम में होता है. MCQ बेस्ड है ये भी एग्ज़ाम, और इसमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा. नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ AIA PGET एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट डेटा है, यानी कि फ़ी और डेट्स और हाउ टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट द डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स यू शुड कीप इन योर माइंड. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, 9 May 2025 to 8 June 2025 टिल 11:50 PM, यानी कि 8 जून 2025 को आप रात के 11:50 तक आप भर सकते हैं. लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, मतलब आप फ़ी पेमेंट जो करना है वो आप 9 जून तक कर सकते हैं, यानी एक दिन आगे तक का भी है. अब फ़ी कितना लग रहा है कैटेगरी वाइज. फॉर जनरल कैटेगरी 2700, and for general EWS or OBC NCL for both 2450 rupees. SC ST and physical person with disabled यानी PWD कोटा as well as for थर्ड जेंडर 1800 रुपीज़ लग रहा है. देन करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन किया जाएगा. करेक्शन आप 3 दिन में कर सकते हैं, 10 जून to 12 जून. ओके, देन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 30 जून 2025.
डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है 4 जुलाई. And advanced city intimation you will find on 24 June 2025. Okay, these are the important dates and fee. Okay, then after I will tell about the how to fill the application form. It's a very important point. Application form, there is a 3 steps. Okay, in first step you have to register yourself through your mobile number, application form, and some basic detail like personal detail, present address and permanent address, and you have to set your password 8 character, minimum 8 character of password. Okay, and in step 2 you have, when you get the application number, then you have to fill the application form. In application form you have to fill education qualification like 10th, 12th and graduation, means BMS qualification details, also your registration number. Okay, and you have to upload the different kind of documents. I am going to share about that. First of all, you have to upload the photograph that should be in under 10, between 10 KB to 200 KB. और फोटो आप या तो कलर में अपलोड कर सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट में, बट आपको 80% फेस आपका दिखना चाहिए, कोई मास्क नहीं होना चाहिए, ईयर्स शो होने चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए. देन कैंडिडेट सिग्नेचर you have to upload between 4 KB to 30 KB, and those candidate who is PWD, under PWD candidate or quota, so they have to upload their document of PWD certificate. Step 3 is payment gateway, means you have to pay the registration fee, and I suggest to all of you that you should pay the application fee with credit card or UPI, because you get nil extra charges, like you haven't pay to GST and like that extra charges. So I think you should use the UPI and credit card if you have. Now I am going to share about the special, or you can say very important points for every candidate who is applying this application form. First of all, never dare to apply 2 application form when you do any mistake in your examination form. हम सोचते हैं कि यार फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो फ्रेश ना हमेशा के लिए आपको बाहर कर देगा. इसलिए because there is a clear cut information or notification that when a candidate apply 2 application form, their application fee will be cancelled. Okay, so while you are applying application form, चाहे आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं या साइबर कैफे से अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड सिट इन फ्रंट ऑफ द monitor or computer, in front of the computer, so that you do proofreading at that time. Okay, you don't share all the documents and data to the cyber cafe personnel so that they will form and you will save your time. But if a single mistake done by the cyber cafe personnel, then your career will be ruined. Okay, so I suggest you, please sit beside the cyber cafe personnel and you do proofreading at the same time. Okay, next important point is you should select very wisely about the language of paper. For Ayurveda you can select English or Hindi. Okay, homeopathy English only, Siddha English and Tamil, and Unani English and Urdu. Means paper will also come in this language. Okay, so if you can't be apply homeopathy in Hindi and Unani in Hindi, okay, you have to select this language only. Okay, at last of this video I am going to share about the every steps of the application form. Means I am showing the replica of application so that you arrange the every information according to the replica. You don't do any mistakes in application form. Okay.